गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। स्टॉक्स टू वॉच पे मैं शुचि रुंगटा आप सबका स्वागत करती हूँ। लास्ट वीक मार्केट में बहुत ही इवेंटफुल वीक था। एफओएमसी की मीटिंग थी, बजट का वोलेटिलिटी था, बजट डे था, बजट अनाउंसमेंट एंड थर्ड द अडानी फियास्को, जिसके कारण मार्केट में हमने काफी वोलेटिलिटी एक्सपीरियंस किया है। व्हाट नेक्स्ट? मार्केट का अब क्या आउटलुक है? बैंक निफ्टी से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कौन से सेक्टर्स है जिस पे हम फोकस करें, कौन से स्टॉक्स है जिन पे हम फोकस करें, आइए ये सब इस वीडियो पे देखेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ और वी विल डिस्कस अबाउट निफ्टी कि व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट इन द निफ्टी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी पे एक डिटेल्ड व्यू। या तो ये निफ्टी का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट हमें क्या कह रहे हैं कि इस हफ्ते मार्केट ने एक लोअर लो बनाया वीकली बेसिस पे, but at the same time it recovered. There is a green candle, वॉल्यूम एक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग था। और अगर बहुत क्लोजली वॉच करें तो यहाँ एक पियर्सिंग लाइन पैटर्न का मूवमेंट है। दिस इज अ पियर्सिंग पैटर्न, बुलिश पियर्सिंग लाइन विच इज अ बुलिश रिवर्सल पैटर्न। सो क्या इसका मतलब कि रिवर्सल हो गया? द आंसर इज नो, बिकॉज कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न को कंफर्मेशन चाहिए तो उसके लिए वो ये पियर्सिंग लाइन को प्रीवियस कैंडल का हाई को क्रॉस करना पड़ेगा, विच इज 18,200। सो वीकली चार्ट बेसिस के हिसाब से रिवर्सल कब कंप्लीट होगा? अबव 18,200। यस, वी हैव साइंस। अगर हम आरएसआई को डिस्कस करें तो आरएसआई न्यूट्रल पे है एंड एमएसीडी अभी भी सेल मोड पे है। वन पॉजिटिव थिंग विच हैज डेवलप्ड इन द वीकली चार्ट्स अनदर इज कि जो लास्ट वीक मार्केट अपने मूविंग एवरेजेस के नीचे क्लोजिंग दिया था वो यहाँ से वापस बाउंस बैक कर गया है। डेली चार्ट्स पे व्हाट इज द सेटअप? डेली चार्ट्स पे अगर आप देखेंगे, इस एवरेजेस को एक बार हटाते, सो वी हैव अ हायर क्लोजिंग 17,800 का जो ये रेजिस्टेंस था, इसको क्रॉस करके मार्केट फ्राइडे इसके ऊपर क्लोजिंग लिया है। नंबर वन। आरएसआई का सेटअप देखते हैं तो आरएसआई हैज अ पॉजिटिव डाइवर्जेंस बिल्ट अप। कैसे? यहाँ पे अगर देखेंगे 23 दिसंबर मार्केट हैड मेड अ बॉटम, RSI was around 17, 18. यहाँ से बाउंस बैक किया, अगेन वी हैव अ बॉटम बट RSI has made a higher low. So there is a positive divergence on the RSI chart. Volume activity, as we can see, last week has been phenomenal. Active volume बढ़ा है। और अगर हम यहाँ मूविंग एवरेजेस को प्लॉट करते हैं तो 200 डीएमए से मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है। मार्केट 200 डीएमए को नहीं क्लोज किया है उसके नीचे। यहाँ पिछली बार जब हम सितंबर अक्टूबर में भी मार्केट इस ही लेवल पे 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ही बाउंस बैक किया था। वी हैव अ सिमिलर सेटअप करंटली ओवर हियर। नाउ कमिंग टू द शॉर्ट टर्म एवरेजेस, जो बजट कैंडल है वेंसडे का हाई एंड वेडनेसडे का लो, दैट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रेंज। सो if we see, budget ka high was 17,980, 18,000 levels, which is also coinciding with my short term moving averages. So 18,000 is also a level, अगर हम derivatives का option chain study करें तो 18,000 call strike पे highest open interest outstanding है, जिसका मतलब कि वहां पे एक tough resistance है। तो based on the daily charts, yes, 18,000 के ऊपर हमें डाइवर्जेंस का कंफर्मेशन मिलेगा, प्लस मार्केट्स अपने एवरेजेस के ऊपर जाएगा। सो यस, 18,000 के ऊपर वी कैन एक्सपेक्ट द मार्केट टू गो बुलिश till 18,200, and once market goes below beyond 18,200, we know that yes, based on the weekly and the daily charts, there's a confirmed reversal. So ये दो important levels on the resistance side ध्यान रखने की चीज है। We also get this confirmation from a short term chart which is the 75 minute। अगर आप यहाँ पे देखें तो 75 मिनट चार्ट पे एक W जैसा फॉर्मेशन हो रहा है, हुआ नहीं है। वी कैन एक्सपेक्ट, क्योंकि यहाँ पे इसका भी स्विंग हाई कितना है, 18,000 लेवल से, and at the same time we have a RSI positive divergence, extreme short term. So this is a 75-minute price chart, W formation, two similar bottoms with RSI positive divergence. Again, when this gets confirmed, only above 18,000. So
मार्केट्स में gap up, down, opening, okay, please don't get overwhelmed. It's a very important level. Beyond 18,000, expect bullishness in the market to 18,250, and beyond 18,250, yes, this fall could be taken as the entire corrections, rise the correction, and we may expect a confirmed bottom. Another important point which I would like to highlight is the Fibonacci retracement level. If I draw this entire rise the Fibonacci, it stands again at this 38.2 level, which again act as a very important support. So again, considering the fact of 200 exponential moving average, Fibonacci levels, considering all the factors, the breach of budget low, which is 17,350, बिकॉज 17,300 350 जो ये गैप जोन भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करता है. सो अगर ये लेवल ब्रीच करता है ऑन द लोअर साइड, then we may expect 16,800 levels to be tested on the chart soon. So definitely the budget candle ka range becomes extremely important for all traders, high and low. Because the moment we breach the budget candle low, then the divergence also fails and we are still below the moving averages any which ways. Okay, so the current downtrend continues. This was a brief on Nifty and अब बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस करते हैं. तो बैंक निफ्टी का सेटअप भी अगेन, बैंक निफ्टी जो कि एक स्ट्रॉन्गेस्ट इंडेक्स था मार्केट्स में, अब अगर आप देखें तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लेवल जो था इधर 41,500 का, इसको ब्रीच किया. देयर हैज बीन अ पैटर्न which has been broken, and इस पैटर्न के हिसाब से अगर हम टारगेट निकाले, so ये इसका वर्टिकल डिस्टेंस है, right, which comes around this, which has been almost reached, because budget डे का जो volatility था उसमें ये target of this pattern has been reached. Now we have 200 exponential moving average का support, वॉल्यूम एक्टिविटी एंड फिबोनाकी लेवल ऑल्सो. अगर हम यहाँ से फिबोनाकी रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ करते हैं, सो यस, 38.2 of the entire rise is also standing at the same level. So Bank Nifty stands at a very important support. RSI is just gone above 50. Same thing holds same unless and until we cross 42,000, which is the budget high level, and the moving averages, we don't get a confirmed bottom sign. So again, we have to wait for this level to cross, only then we can expect further bullishness in Bank Nifty also. Coming to the short-term charts, Bank Nifty, again, we do have positive divergence, but this high, these two candles act as a very important resistance. So similar view hai. नाउ कमिंग टू सेक्टर्स, स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स कौन से हैं? हमने आईटी सेक्टर के बारे में वी बीन टॉकिंग कंसिस्टेंटली कि आईटी सेक्टर हैज बीन अ स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मर इन द मार्केट्स एंड इट हैज कंटिन्यूड टू डू सो. In fact, in spite of this entire weak volatility and all of that, IT sector has managed to close in green and stay above its moving averages without showing too much of volatility. So IT sector definitely a strong sector in the entire markets. Second is the auto. Auto also we mentioned. So auto has been very volatile, but selective auto stocks are doing quite well in the markets, and will be like Tata Motors, Ashok Leyland, Mahindra and Mahindra. They are the strong auto sector. So auto sector looks overall positive. In fact, if we breach the budget session high, which is 13,540, we have a newer high for auto sector showing renewed strength. The third index which I would like to talk about, the PSC index, one of the most talked about and a favorite index all these months in the markets. But in the last week, PSC index has broken a very, very important trend line and is currently at a very important support. अगर आप ये देखें तो previous swing low, 200 moving average, they all are at the same level. RSI is just at the 30 level, so it's too low.
इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, बट अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे एक परफेक्ट कैंडलस्टिक हैमर का फॉर्मेशन हुआ है. सो अगेन, इफ एनी मूवमेंट बियॉन्ड 4310, we can expect a very sharp pullback in the PSE index. So these are the three sectors which you can watch out for. Coming to stocks, as I said that auto sector looks quite positive. So first stock which I would like to talk about is the Mahindra and Mahindra. वीकली चार्ट सेटअप पे चलते हैं तो अगर आप देखें तो ये कॉन्स्टेंटली अपने एवरेजेस को मेंटेन करके ये एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है इस हफ्ते, महिंद्रा एंड महिंद्रा. ऑन द डेली चार्ट्स अगर आप यहाँ पे देखें, सो apart from this, in spite of the volatility, it has maintained above the breakout level. ये breakout level था, इसके ऊपर ये maintain किया है. Volume activity has been positive. RSI is bullish and MACD is also bullish. So risk reward point of view से Mahindra and Mahindra looks quite positive. 1330 जो कि मूविंग एवरेज लेवल है, ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट होगा, and the stock can test higher levels from these place. Second stock जो मैं डिस्कस करना चाहूंगी वो IT स्पेस से है, TCS, one of the heavyweights in the index. Now weekly chart पे अगर आप देखें तो मूविंग एवरेज पॉजिटिव कन्वर्जेंस हमें मिला है weekly averages का, which is a very very positive sign. There is a pattern break on TCS, and above that we have a follow-up buying after the breakout level also. So weekly chart setup on TCS looks very good. Coming to the daily chart setup, अगर आप यहाँ पे देखें, so TCS has shown strength. Friday को थोड़ा सा candle formation is weak, but the prices moved up. So yes, 3400, 3420 will be an important support for this stock. Any pullback to 3420 levels is a good opportunity to accumulate, and the setup gets negated below 3360 level. Okay, and the stock can test gradually 3530 and 3600 levels on the daily charts in the coming few weeks. So TCS looks strong stock in the IT space. Third stock which I would like to talk about is based on the budget analysis that, the government said that it's gonna do lot of infra space and the capex, and along the airport space, it's gonna build new airports, many new airports. So I was just reading a lot of stocks, and one such stock which I came across was Indigo. So Indigo has been technically a very strong stock. अगर आप यहाँ पे weekly setup देखेंगे तो इट हैज बीन इन एन अपट्रेंड. एक ट्रायंगल फॉर्मेशन के बाद ये ब्रेकआउट भी दिया है, और इस ब्रेकआउट के बाद अगर आप ये देखिए प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर जब ये क्लोज किया है, 3 हफ्ते से ये यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है. मतलब इट्स अ टिपिकल 3 कैंडल कंसोलिडेशन, एंड वी मे एक्सपेक्ट ब्रेकआउट वेरी सून. दिस रेंज कैन बी ब्रोकन वेरी सून. सो सेटअप अच्छा है, इंडिकेटर्स पॉजिटिव है, एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है. सो इस स्टॉक को रेडार पे रखिए. once we have a movement beyond this 2140 2160 levels, ये स्टॉक एक नया हाई बनाएगा, and it can test around 2300 levels plus. So Indigo is got a good setup. इस स्टॉक पे ध्यान रखिए. तो टू कंक्लूड दोस्तों, मार्केट वॉलेटाइल है, विक्स के लेवल्स नीचे गिरे हैं. इनफैक्ट इंटरनेशनल यूएस इंडाइसेस को अगर देखेंगे तो they have shown strength. Dow is near a resistance, but once it cross, there'll be further up move. मार्केट्स में कुछ बॉटम आउट सिग्नल्स दिख रहे हैं इस हफ्ते. सो लेवल्स का ध्यान रखिए. 18,000 के बियॉन्ड यू कैन गो बुलिश, एंड कंफर्म्ड वीकली बेसिस पे मीडियम टर्म सेटअप चेंज होने के लिए वी नीड अ क्लोज बियॉन्ड 18,200. budget high and budget low remains very very important for a trader. Thank you.